Good morning, class. How are you? Fine. Okay. Then, firstly, tell me all of you solving the problems or not. If not solved, then just let us try to start to solve the problems. Okay. So, today we are discussing about the properties of subtraction. Okay. In the earlier video, I just tell you about the properties. Okay, we have the four mathematical operations. The first one is addition, second one is subtraction, third one is multiplication, and the fourth one is division. Okay, and when we discuss about the properties, then regarding to these four mathematical operations, okay, we have the properties just like as closure property, commutative property, associative property, or after that zero property, additive inverse property, multiplicative inverse property, and so on. Okay. और मैंने आपसे ये भी कहा था कि in the case of addition all the properties will be satisfied. Satisfied means what? Verified means LHS must be equal to the RHS in the case of addition. All the properties will be vary in the case of addition, but some properties will not vary, will not satisfied. LHS must not be equal to RHS in the case of subtraction. I think all of you clear these things. Okay, so we are discussing about the properties of subtraction. Before starting the discussion, I just tell you, in the case of commutative, we have two integers, or in the case of associative, we have three integers. Either any mathematical operation we have, either addition, subtraction, multiplication, division, either any mathematical operation we have, if there is a commutative property, then this will consist two integer, either any type of integer is there. If this will consist associative property, then number of integers must be equal to 3. Either these three integers are being positive integers, these three are being negative integers. Okay, or one will positive, two will negative, two will positive, one will negative. We have different forms are there. Okay, so today we will start property number third. Subtraction of integer is not associative. You know what is the meaning of this one? Subtraction of integer is not associative. ठीक है, इंटीजर्स का जो एसोसिएटिव इंटीजर्स का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता है इन द केस ऑफ एसोसिएटिव. ओके, सो वी नो दैट इन द केस ऑफ एसोसिएटिव वी हैव थ्री इंटीजर्स. So we will take the three integers. First two will taken inside the bracket and last थ्री. अगर तीन इंटीजर्स आपके पास हैं तो पहले दो इंटीजर्स आप जो है एक ग्रुप में लेते हैं, थर्ड वाले को आप इंडिविजुअल लेते हैं आरएचएस में, फर्स्ट वाले को आप इंडिविजुअल लेते हैं और लास्ट टू को आप ब्रैकेट में लेते हैं. ठीक है, जस्ट हियर वी हैव द थ्री इंटीजर्स. वन second integer is what? -2, that is a negative integer. Third one is what? -3, this is the negative integer. So we are taking the LHS. In the LHS, okay, a minus b minus c, okay, means a minus b will be taken inside the bracket, a minus b will be taken inside the bracket inside the group. ठीक है, and c will taken alone. Okay, then 1 minus this one is what? -2, and after that -3 is there. Okay, this is what? A minus b inside the bracket, then after that minus c is there. When we are solving, then minus into minus what beta? Plus, then 1 plus 2 is there. Okay, this should be written inside the bracket. After that minus into minus what? Plus is there, plus 3. Then again 1 plus 2 what? 3. 3 plus 3 is what? 6. This is the value of LHS. Okay, now we will change the order. Okay, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इंटीजर को हमने ग्रुप में रखा था, अब ऑर्डर को हम चेंज कर देते हैं. फर्स्ट को हम अकेला कर देते हैं, सेकंड और थर्ड को हम ग्रुप में रख लेते हैं. ठीक है,
Then firstly we will solve this one. Okay, minus 2, 1 minus, okay, this one is what, minus 2 minus into minus what, plus. Okay, when we will open this one, then 1 minus 3 minus 2 is there. Okay, subtracting, then we get 1, and here is what, minus 1, then minus 1, 1 minus 1 is what, 0. So LHS must not be equal to the RHS. Okay, that is the meaning of subtraction of integers is not associative. Means what, LHS is not equal to RHS. Subtraction of integers is not associative. Okay, next property number 4, zero property. You know what is the meaning of zero property? Okay, either in any integer we will subtract 0, okay, or from 0 we will subtract any integer, then we get the integer. ठीक है, that is the meaning of zero property. यानी कि किसी भी integer से अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या किसी भी इंटीजर को अगर हम 0 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा. ओके, जस्ट लाइक एज इफ ए इज़ द इंटीजर, देन ए में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 को, देन व्हाट द आंसर, इंटीजर ए. 0 में से अगर हमने इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन व्हाट द आंसर, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर. Only the difference is what, here we have the positive integer and here we have the negative integer. Just like as 5 minus 0, 5 positive integer, minus 6 minus 0. ठीक है, 0 will never consist plus or minus sign. 0 is what, simply 0 integer. Okay, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होता है, दे दिया गया है. ठीक है, हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे. ठीक है, माइनस 6, व्हाट द आंसर, माइनस 6 इज देयर, नेगेटिव इंटीजर. 0 minus 42, then minus 42, negative integer. Minus into minus, what, plus is there, then positive integer. Got it? So we can say that either 0 will be subtracted from any integer, or any integer will subtracted from 0. In both the cases we get the integer. Property number 5, if a is an integer, then a minus 1 will also be an integer and the predecessor of a. ठीक है, if अगर कोई इंटीजर हमारे पास है, ठीक है, और उस इंटीजर में से यदि हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो भी हमारे पास क्या होगा, इंटीजर ही होगा. ठीक है, लेकिन वो जो इंटीजर होगा, ठीक है, वो किस फॉर्म में होगा, वो प्रीडिसेसर के फॉर्म में होगा. दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, प्रीडिसेसर. ठीक है, सेम थिंग इज देयर. ठीक है, अगर कोई इंटीजर हमारे पास है, उस इंटीजर में अगर हम 1 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो what we have, again we have the integer. ठीक है, we have the integer. अब वो इंटीजर क्या होगा, सक्सेसर के फॉर्म में या आफ्टर वैल्यू के फॉर्म में होगा. ठीक है, बट फॉर 0 इज इट नॉट पॉसिबल टू गेट द प्रीडिसेसर. 0 के केस में हम प्रीडिसेसर, ठीक है, 0 के केस में वी विल गेट द प्रीडिसेसर. ठीक है, 0 के केस में भी हम प्रीडिसेसर फाइनलाइज कर सकते हैं. ठीक है, और 0 के केस में हम सक्सेसर भी फाइनलाइज कर सकते हैं. तो किसी भी नंबर के लिए हम सक्सेसर और किसी भी नंबर के लिए हम प्रीडिसेसर को फाइनलाइज कर सकते हैं. गॉट इट? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या दिया गया. प्रॉपर्टी नंबर 5 में इफ़ 0 इज़ द इंटीजर, देन वी विल सब्ट्रैक्ट -1. ओके, -1 मीन्स व्हाट, वी आर जस्ट गोइंग टू फाइनलाइज द प्रीडिसेसर ऑफ 0. अगर आप -1 कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 0 का प्रीडिसेसर निकाल रहे हैं. तो व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ 0, देन यू कैन से -1. एंड -1 इज व्हाट, -1 इज द नेगेटिव इंटीजर. सेम थिंग इज देयर. इफ द -3 में से अगर हमने -1 किया, इसका मतलब क्या है, द प्रीडिसेसर ऑफ -3 इज व्हाट, -3 -1, देन वी कैन से -4 इज देयर. ओके, property number 6, if a is an integer, then a plus 1 will also be an integer and successor of a. ठीक है, अगर कोई इंटीजर दिया गया है, उस इंटीजर में अगर हम +1 को ऐड कर देते हैं, मीन्स वी आर जस्ट गोइंग टू फाइनलाइज द आफ्टर वैल्यू और द सक्सेसर वैल्यू. ओके, देन द फाइनलाइजिंग वैल्यू will also be an integer, और दिस इज द केस ऑफ सक्सेसर. अगर हम +1 करते हैं तो +1 का मतलब क्या हुआ कि हम आफ्टर वैल्यू को फाइनलाइज कर रहे हैं, सक्सेसर को हम फाइनलाइज कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल 0 + 1 किया, मीन्स व्हाट, +1 का मतलब वी आर जस्ट गोइंग टू फाइनलाइज द सक्सेसर ऑफ 0. सक्सेसर ऑफ 0 को ही हम लिखते हैं 0 + 1, देन व्हाट द आंसर, 1, एंड 1 इज व्हाट, द पॉजिटिव इंटीजर. गॉट इट?
सेम थिंग इज देयर, सक्सेसर ऑफ -3 प्लस 1, व्हाट द आंसर -2, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, गॉट इट. So regarding this we will finalize these things ki what is the meaning of successor and what is the meaning of predecessor, got it. So on the basis of these things we will finalize the value. Okay, same thing is the multiplication of integers. Okay, what is the meaning of multiplication of integers में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं. अब एक चीज़ याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है, या फिर एडिशन के केस में, डिवीज़न के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में, ठीक है, इंटीजर विल कंसिस्ट द साइन आल्सो. देन फर्स्टली वी विल add the sign, we will multiply the sign, we will divide the sign, we will subtract the sign, then after that we will add the integer, multiply the integer, subtract the integer or divide the integer, ठीक है. आइदर वी हैव एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन, हमारे पास ऑपरेशन किसी भी टाइप का हो, डजंट नॉट मैटर, ठीक है. लेकिन अगर हम एडिशन करते हैं तो सबसे पहले हम साइन को एडिशन में लेके सॉल्व करते हैं, फिर इंटीजर्स को हम सॉल्व करते हैं. मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, देन आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई द नंबर और द इंटीजर, ठीक है. तो मल्टीप्लिकेशन के केस में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट हैपेंड व्हेन वी विल मल्टीप्लाई द साइन. ओके, माइनस को अगर आप प्लस से मल्टीप्लाई करते हो, माइनस इंटू प्लस, देन व्हाट द प्रोडक्ट इज देयर माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, देन व्हाट द प्रोडक्ट इज देयर माइनस. ओके, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, देन व्हाट द प्रोडक्ट इज देयर प्लस, plus multiply by plus, then what the product is there plus. Means when same sign are multiplied then we get the same result in the form of plus sign, ठीक है. जब सेम साइन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे माइनस इंटू माइनस, व्हाट द आंसर प्लस इज देयर. ओके, प्लस इंटू प्लस मल्टीप्लाई किया, सेम साइन है, व्हाट द आंसर, ठीक है, प्लस इज देयर. अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि माइनस इंटू माइनस, सर ने बोल दिया सेम साइन तो सेम साइन मीन्स व्हाट, माइनस इंटू माइनस चाहे जितनी बार हो माइनस सब का नहीं, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन वी ऑल्सो चेक द ऑर्डर, ठीक है, आइदर इट इज इवन और ऑड. इफ दिस वन इज इवन देन वी हैव द प्लस, इफ दिस वन इज ऑड देन वी हैव द माइनस. ओके, सो सी हियर a into minus b. Okay, a will consist with sign plus sign, then firstly multiply the sign, plus और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा. ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ए बी, तो प्रोडक्ट क्या हो गया माइनस ए बी, ठीक है. सेम थिंग इज देयर, माइनस ए और माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. एंड प्लस साइन विल नेवर रिटर्न बिफोर द नंबर. ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, गॉट इट. अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्लस ए है और ये क्या है, प्लस बी है. प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा, गॉट इट, यस और नो, ठीक है. सी फ्यू एग्जाम्पल्स आते हैं. -5 इंटू 7. ओके, अब 7 के साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो माइनस को पहले प्लस से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, माइनस, 5 7 जा 35, ठीक है. 6 के साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस, 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया दिस वन. 12 के साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन है. 13 के साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन है, ठीक है. प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट साइन क्या आएगा, प्लस आएगा. फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 156, ये देखिए दोनों माइनस में है, ठीक है. माइनस इंटू माइनस व्हाट, प्लस इज देयर, ठीक है. 8 को 14 से मल्टीप्लाई किया 112 इज देयर. ओके, सो these are the basic rule for the multiplication. We are not discussing about the commutative law, associative law, closure property, whatever. Okay, before that these two rules are the basic rules. Okay, regarding to this we will multiply the things. Okay, after that property number first, this one is what, closure property. Okay, when two integers are being multiplied, okay, then we get the integer, ठीक है. जैसा कि हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया है कि अगर दो इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटीजर ही मिलता है. दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटीजर ही मिलता है. अब जो इंटीजर मिल रहा है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, डजंट नॉट मैटर, मिल क्या रहा है, इंटीजर मिल रहा है, ठीक है. सिमिलरली वी कैन से दैट व्हेन टू इंटीजर्स आर मल्टीप्लाई देन वी गेट द इंटीजर. जैसे ही है, अब 3 को, ठीक है, फर्स्टली साइन को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस, माइनस इज देयर, 3 4 12 -12,
ठीक है, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? इंटीजर। कौन सा इंटीजर मिला? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, 5 और 7, 5 विल कंसिस्ट प्लस साइन, 7 विल कंसिस्ट प्लस साइन, प्लस इंटू प्लस, प्लस इज देयर, 5 7 जा 35, पॉजिटिव इंटीजर। माइनस प्लस माइनस 99, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, -7 इंटू -6, फर्स्टली मल्टीप्लाई द साइन, माइनस इंटू माइनस, प्लस is there, 7 6 are 42, positive integer. Okay, then this should be clear out. When we will multiply the integer, then we get the integer. Got it? So till here you may just read all the topics and solve all the exercises. I think that you will not face any problem when you will solve the exercises. Okay class, in the next video we will discuss the another properties related to the multiplication, just like as commutative law of addition, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में, एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है या नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं होती हैं। सो फर्दर वी विल डिस्कस। ओके क्लास, थैंक यू।